So today our topic of discussion is some application of determinant, मतलब कहाँ कहाँ पे determinant यूज होता है, आज वही दिखाने वाला है। तो फर्स्ट ये है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। सो तो कैसे ट्रायंगल का एरिया निकाल पाता है वही आज दिखाने वाला है हम लोग। इफ ए बी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ to A into B for the trigonometric region. So for the determinant, how to find the area of a triangle, that's I show you. Okay, so we are taking a triangle with 3 points like x1 y1 x2 y2 and x3 y3. So this is the trigonometric equation of area of a triangle, but for the determinant we have to understand how it is coming. Okay, तो मैं हिंदी में ही बता देता हूँ। तो पहले इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लाएंगे। कैसे? इसको सो हाफ जैसे तैसे पर x1 x2 x3, सो इस मैट्रिक्स होना चाहिए 3x3 मैट्रिक्स। So for taking 3x3 matrix, we can take this is 1. Yeah. So this is the area of L. So we have to remember this form as well as, so इस डिटरमिनेंट को हमको तोड़ के जो मिलेगा उसे को रिमेम्बर करना होगा, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा जो निकालो इस ट्रायंगल का एरिया, सो तब तुम्हें चाहो तो इसमें से निकल सकते हो, अदरवाइज x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. दिस इज द फाइनल equation of a area of a triangle. So if this is the one property, if this is 0, if this is equals to 0, then you can tell this is equilateral triangle. Okay, so क्वेश्चन में आया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल चेक करो इस डिटरमिनेंट को, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं। सो इफ देयर एरिया इज इक्वल टू 0, देन यू कैन टेल दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो एन एग्जांपल वी कैन सी दैट. सो गिवन द पॉइंट्स लेट -3 -5 that is like A, and for the above example, so another one point that is 5 2 and let C -9 and -3. तो आपको दिया हुआ है कि ये तीनों पॉइंट से आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा एंड उसको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेंगे? डायरेक्ट इस फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि सो हियर x1 इज दैट, y1 इज दैट, x2 इज दैट, y2 इज दैट, x3 इज दैट, y3 इज दैट. यू कैन पुट द डिटरमिनेंट फार्मूला, अदरवाइज यू कैन पुट दैट फार्मूला. सो हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं. तो x1 क्या था? -3 था इंटू y2 माइनस y3. सो y2 कितने हैं? हमारा y2 है 2 -5. सो इसी तरह के करके आपको और 2 निकलना पड़ेगा. सो हाफ -3 इंटू 2 माइनस प्लस 2
5, 10. 2 minus 5 minus 5 minus 5 plus 5. So 2 plus 5 is 7 plus 5 into minus 3 minus minus plus 5 minus 3 2. Loss of minus 9, that is minus 9 into minus 5 minus 2 minus 7, that is half of 3 7 minus 21 plus 10 minus minus plus 30. So minus 3 5 minus 15, sorry minus 15. So half into 58, so that is 29. So this is the area of a triangle, of this triangle, these points. Okay, so this is for today. So जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दो। और थैंक यू।